Namaste. We could conclude the subject where we said, are moral values degrading amongst the humans in general and particularly us in Indians? So ये हम discuss कर रहे थे, तो I'll just brief you in few minutes. We discussed that this question of right and wrong is man-made. It is individual between us, every individual. What is right for you may be wrong for me. What is wrong for me can be right for you. And then we decided to go through the composition of this world and humanity. We said other than the 5 basic elements, world comprises of 4 other things: minerals, vegetables, animals and human beings. And then we compared that human beings can also be compared with these 4 beings, which is, it can be a mineral person who is very self-centric, only to himself or herself. A person thinks of beyond that, thinks about their family and other things, is a vegetable human being. A person who is beyond that, who thinks about his society, his country or her country, etc., is an animal human being. And one who considers good for all human beings in the world is a human being. And the person who transcends beyond the terrestrial boundaries of this world is considered as a godly human being. So ये किया हमने. उसके बाद we went into 5 elements of human beings' existence, which is life, code of living, how and why we act, what are the actions, do emotions play any role, what is the wisdom. And then we delved into what is self-realization is necessary or not, and then ultimately that what is the eventually far realization of the eventual truth. And then we want to know the unknown. We went into dwelling when this world was created, by whom. We say, somebody says that it was a chemical reaction between 2 molecules which took millions of years, then the life came into it. Some people believe that God who created this world. So it still remains a kind of a mystery or unknown thing which we are all looking for. And we went into the frame of minds. Our mind is in 3 states of being. One is a restless situation, when the mind is restless. And then we said it's an imperfect mind most of the time, because our mind goes into past very quickly, goes into future very quickly. Past, when we think of, we have regrets in life. But when we think of past, then there are anxieties get created. ये ठीक होगा, नहीं होगा, बुरा होगा, अच्छा होगा. And then there was a state of perfect mind. So हम लोगों ने ये discuss किया. And then we went into physical, emotional and intellectual state of thing, and lack of information, understanding and experiences lead us to ignorance, and the abundance of all these 3 lead us to the wisdom. And what is the code of living? We concluded in this show that giving is better than taking. Remain in the happy situation than the sorrow or misery, because when you will hurt anybody, you will yourself will be miserable. Love than hatred, and knowledge versus ignorance. So a code of conduct can be defined by your beliefs, by your religion, by your forefathers, by yourself. So anyway, let us say that the moral values for each one of us is our own personal thing. So, but लेकिन समझना ज़रूर पड़ेगा कि हम लोगों की सच्चाई क्या है, और सच्चाई से फिर आगे हमको राइट और रोंग में जाएंगे, और राइट और रोंग जब समझ में आ जाएगा तो फिर हमारे को समझ में आएगा कि वेदर द ग्राफ और द पैरामीटर ऑफ वैल्यूज़ इज़ गोइंग अप और गोइंग डाउन. तो इसी कड़ी में मैं ये कहूँगा कि what is the difference between acting and action is my question to you. Acting is somewhat which you want to project something, and action is which it comes instant. Acting is projection. Yeah. And action is? Oh, which comes instant. Which comes instantly. Okay.
ठीक है, बताइए और। यस। Hello, sir. Acting is something which is superficial, whereas actions are deeply associated. They come from within. Very good answer. Very good. What, as rightly she said, acting is something is being done without your own selfish purpose. मुझे भूख लगी है, खाना खाना है. Acting is lifeless actually. Other than maintaining yourself, other than fulfilling your desires, there is no purpose in the acting. Whereas when you are taking some action, then you first think about it, you plan it, you have an objective to achieve, you have a productive thing to achieve, there is a life in the action. So that is the difference between acting and action. Selfless, and actions are mostly selfless. कुछ लोग, those who are doing good to the society, they are also doing action. अगर इस प्रकार के कुछ लोग आपके भी ध्यान में आए तो हमें ज़रूर लिख भेजिए. एक देखिए कि किस प्रकार एक गांव वालों ने अपना कुछ चीज़ करने के लिए खुद को खुद उठ के कुछ काम किया. हरियाणा का भिवानी जिला, जहां के खिलाड़ी, खासकर बॉक्सर्स, दुनिया भर में हमारे देश का परचम लहरा रहे हैं. वहीं इसी जिले के एक गांव प्रेमनगर से करीब 25 नेशनल लेवल हॉकी के खिलाड़ी कई हॉकी टूर्नामेंट्स में भाग ले चुके हैं. यहां के बच्चे बच्चे में स्पोर्ट्समैन बनने का जुनून है, देश के लिए मेडल लाने का जुनून है, लेकिन नहीं है तो एक स्टेडियम. और इसी कमी को पूरा करने के लिए इन गांव के युवाओं ने खुद ही एक स्टेडियम तैयार कर दिया. हमने इस स्टेडियम का निर्माण के लिए जी तोड़ मेहनत की है. यहाँ पहले आते थे CRG स्टेडियम के नाम पे कुछ नहीं था. बच्चे आते थे, आगे चले जाते थे. जो बच्चे रनिंग करते थे वो भी वहां जाके रनिंग करके आने थे. उनको कोई सुविधा नहीं थी यहाँ रनिंग करने के लिए. गांव की ग्राउंड की सुविधाओं को देखते यहाँ पर इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं है. ग्राउंड में घास उगा हुआ है. जहाँ तक ग्राउंड का देखा जाए तो गांव के प्रयास से ये ग्राउंड चल रहा है. सरकार ने इसमें कोई भी सुविधा नहीं दी है. ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या के निदान के लिए गांव का प्रतिनिधिमंडल कई बार विधायकों और मंत्रियों से लेकर अधिकारियों के पास भी गया, लेकिन कुछ हाथ न लगा. 1999 से लेकर आज से 8 महीने पहले तक इस स्टेडियम में गहरे गड्ढे थे, झाड़ियां थी, जो इस स्टेडियम की बदहाली को बयां करती थी. लेकिन कहते हैं ना, कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मंजिल दूर नहीं होती. बस इसी जज्बे के साथ युवाओं ने गांव वालों से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया और देखते ही देखते 2.5 लाख रुपए स्टेडियम की मरम्मत के लिए इकट्ठा कर लिए. और सभी गाँव वालों ने अच्छी सपोर्ट की हमें, और जो सरपंच साहब उन्होंने अच्छी सपोर्ट की. पंचायत की सभी सपोर्ट से जो भी सामान की सुविधा वो गांव की तरफ से ही हो रही है और सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है. हालांकि इस स्टेडियम को सरकार से मान्यता देने की गुहार भी गांव वाले पिछले 16 सालों में कई बार लगा चुके हैं, लेकिन सरकार से उम्मीद इन्हें ज्यादा नहीं है. बहरहाल एक बात तो तय है कि स्टेडियम बनने या उसको मान्यता मिलने के इंतजार में ये गांव किसी भी नन्हे ध्यानचंद को स्टेडियम के इंतजार में रखने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है. ये जब तक हम अपने चीज़ों को अपने हाथ में नहीं लेंगे और एक्शन करना शुरू नहीं करेंगे एक्टिंग की बजाय, तो शायद ये विश्व इतना सुंदर ना हो जो हम